Good morning, everyone. I am Dr. Kiran Lata, co-founder and executive director of SARA Institute Data Science. So today we are here for second anniversary celebration of SARA. So today's schedule is like this. In first 10 to 15 minutes, we will discuss about SARA and then followed by one invited lecture on data skills for modern employment by Dr. Neeta Singh from Gautam Buddha University, followed by क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो सबसे पहले हमने सारा नाम क्यों रखा? सारा नाम हमने जो रखा है दो ग्रेट बहुजन लेडीज के नाम पे रखा है। ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले जी से हमने सा नाम लिया है और माता रमाबाई अंबेडकर जी से हमने रा नाम लिया है। तो सा और रा जोड़कर हमने सारा बनाया है। तो इसी तरह इसका नाम सावित्रीबाई रमाबाई इंस्टीट्यूट डाटा साइंस रखा गया। Our mission is to democratize data science education in India. और जो सारा इंस्टीट्यूट डाटा साइंस है वो सारा एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर में है और ये ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। हमारा जो इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन भिवाड़ी राजस्थान में हुआ था 5 अप्रैल 2023 को और धीरे धीरे वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ गई तो हमने वहाँ से मूव किया सोनीपत में। और ये हमारी फर्स्ट इमेज है जिसमें हमने फर्स्ट डे यहाँ पर अपने ऑफिस में काम की शुरुआत की। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं द अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी सोनीपत, स्पेशली प्रेसिडेंट मिस्टर सत्यवान भाटिया जी एंड ऑल रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का कि उन्होंने हमारे काम को समझा और हमें सपोर्ट किया। हमारे यहाँ पर 2 फ्री कोर्सेज चलते हैं कंप्यूटर के और इंग्लिश के 4 to 6। 4 to 5 हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं और 5 to 6 हम इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये क्लासेस रेगुलर मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। हम यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग्स भी देते हैं हर 3 मंथ्स के बाद जो कि डेटा साइंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं। हमारा जो फर्स्ट समर स्कूल था वो उसका टॉपिक था रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च यूजिंग आर। उसमें डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये स्टूडेंट्स एमटेक पीएचडी थे और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं फैकल्टी भी थे। उन्होंने यहाँ पर जो है आर लैंग्वेज के बारे में जानकारी ली। फिर हमारा यहाँ पर एक विंटर स्कूल भी चला जो कि स्टैट्स पे था। उसमें भी डिफरेंट स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और स्टैट के बारे में समझा यूजिंग आर लैंग्वेज। फिर हमारा थर्ड बूट कैंप चला है क्वार्टर के ऊपर जिसमें बच्चों ने जो है अपनी अपनी वेबसाइट कैसे डेवलप करनी है ये सीखा। हमारे यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग्स और कोर्सेज हुए हैं। ये उनकी इमेजेस है जो हमने ऑनलाइन करे हैं और कुछ हमने ऑफलाइन भी करे हैं। Now coming to facts and figures of last 2 years, we taught 178 students out of which 64 are women. We give 6 residential data science trainings and 7 international speakers were there. We give 6 invited talks or workshop in other institutes like GJU, SRM University, JNU, बॉक्सन यूनिवर्सिटी। इसमें हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस दी हैं और एक हमारा इवेंट हुआ था जो कोलैबोरेशन था स्पेन के साथ। नाउ कमिंग टू अनाउंसमेंट ऑफ 2025। तो नाउ आई इनवाइट डॉक्टर अजय कुमार कोली, co-founder and executive director of SARA Institute Data Science, to give announcement of 2025. Now coming to Dr. Ajay Kumar Koli. Thank you, sir. Thank you, madam. And the first announcement we have for 2025 is that we are going to start SARA Sakshata mission, under which we are going to spread awareness about the data science education and opportunities in the field of data science in the different parts of India. Second, there was a lot of demand from the student side that we should launch something online. And also there was a lot of demand for the Python course. So now first time we will try to launch online Python course in 2025.
And third, this year onwards, we are also going to launch one annual report of SARA, in which you can find all the details about this SARA, all the work done by the SARA at the end of the year, right? So these are the three and major announcements we want to share for this year. Now, about the today's honored guest, Dr. Professor Neeta Singh. Dr. Neeta Singh, she's an assistant professor and she's also head of the department and also research coordinator at the Department of Information Technology at Gautam Buddha University, Noida. She's also fellow of IETE, Government of India. And recently in 2022, she also awarded Women Empowerment Award by the Social Development Federation. Professor Neeta has published around 42 research articles in the areas related to communication network, next generation network, machine learning, MANet, VNet, and Internet of VNet. And under her supervision, 7 PhD scholars already received their PhD degrees. And she herself was awarded PhD degree in 2007 from Agra University. And before that, she has done MTech, Masters in Computer and Management, and BSc in Mathematics, all with the first division distinction. So we are honored to have Dr. Professor Neeta Singh today as a speaker on the second anniversary of SARA. And she's going to speak about data skills as modern employment. So we welcome you, Professor Neeta Singh, and now over to you. Thank you. First of all, though, thank you so much from the Ajay ji and Kiran for such a beautiful introduction you have given to all the participants. And I also like to congratulate you for your second anniversary. That you people are doing a wonderful job. You know, uh, the name which you have opted is for the Savitri Bai and Rama Bai, and I'm very thankful that people are there who are actually thinking about the जो हमारे फाइटर्स हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए इतना सोचा इतना सब कुछ किया एंड हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए एंड आप ही मेरे लिए एक तो प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं कि आपने इतना अच्छा टाइटल और इतना अच्छा वर्क स्टार्ट किया है मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ये तो प्रार्थना है कि आप आगे काफी ग्रो करें और हमारे स्टूडेंट्स को इसी तरीके से आप मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहे बहुत जरूरत है आज के टाइम में तो आई थिंक मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं क्योंकि मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ यू Yes, पीपल ma'am. वांट आई है ना तो मुझे लगता है कि हम जितनी सरल भाषा में इसको समझें कि व्हाई डेटा साइंस इज इम्पोर्टेंट नाउ द डेज सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्लाइड्स it is visible. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much. So, in today's topic of my talk, I'll be covering data skills for modern employment. क्यों आज के टाइम में डेटा साइंस की इतनी जरूरत है वी आर लिविंग इन द एरिया ऑफ एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे लोगों को चलाने के लिए खाने की जरूरत होती है ना फूड की इन सब चीजों की सो डेटा इज अ मेन फ्यूल फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो लोग भी आज के टाइम में इस एआई की टेक्नोलॉजी और डेटा से थोड़ा सा भी दूर रह जाएंगे उसको नहीं समझेंगे आगे का जो मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट है दे विल बी फार अवे फ्रॉम दीज स्किल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इट इज वेरी इजी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डेटा स्किल एंड आगे आने वाला जो टाइम है मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट का वो किस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज करेगा दिस इज द डेटा स्किल्स विच विल एम्पावर द वर्क फोर्स फॉर द डेटा ड्रिवन फ्यूचर आगे आने वाला सारा टाइम जो है वो डेटा ड्रिवन फ्यूचर का है एंड टेक द फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स हम लोग आज के टाइम में सभी लोग यूज कर रहे हैं उन एग्जाम्पल्स को उन फैसिलिटीज को और हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डेटा साइंस उन चीजों में एप्लीकेबल है एंड इट इज ऑलरेडी अप्लाइड और अभी बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर
इसको और अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है. तो slides are not changing. Let me, yes. ऊपर की जो लाइंस है ना वो थोड़ा सा हो गई है. सो एक्चुअली आज के टाइम में जितने भी हमारे डिसीजंस हैं वो सब डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं. ये हर एक इंडस्ट्री को जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट है डेटा स्किल का, वो आज का जो वर्क फोर्स है वो सब उसी पर डिपेंडेंट है. सो विल, ओके, यू पीपल आर कंफर्टेबल विद द हिंदी ना? मे कंटिन्यू विद दिस इंग्लिश? Ma'am, it is okay. So I think English Hindi mix will be good, not a problem. ओके ओके. Yes. Because nowadays Google is one of the example which is using an amount of data to refine the search algorithms, improve advertisement, and enhance user experience. You see, whenever you are searching something on the Google, it is coming to you in the very, first line, first web page. So that means Google is the first one who uses the vast amount of data to refine these algorithms, which will gives you a, advertisement related to your searches, and whatever you are searching, it will just floating with you all these things. So why the data skills are important? Because everybody is not knowing that what are the algorithms behind this, किस तरीके से वर्क कर रही है. तो जब आप डेटा स्किल्स को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आज के टाइम में यूज होने वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं. सो इफ यू सी दैट in our daily routine, we generate a huge amount of data. The sheer volume of data is generated daily across the industry, across the various social media, various Google apps, or various जितने भी आप applications use कर रहे हो, whether it is Netflix, whether it is Uber, whether every time you are first filling the data, you are giving your mobile numbers, and you are fetching the information there. So these companies are actually getting the data from you to provide the services to you based on your interest, based on your choices. So these companies are actually playing with your data, and we people are, without knowing everything, we are just giving the data. That is a one part. And another part is we must understand that how the collection of data and the data is being used to provide you the facility over the internet. Those who can analyze and interpret the data, they can make the decision based on data, are in a high demand. जो भी लोग डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, जिनको भी डेटा स्किल्स आती हैं, डेटा को एनालाइज करना आता है, डेटा का इंटरप्रिटेशन करना आता है, they can make the decisions based on the demand, based on their data which they are being submitting. So for that, we need the data skills. We must be able to read and understand what the data is being provided and around to you. When you use, let me take one example. When we are using a WhatsApp, and WhatsApp may, you people are getting, you are sharing your PDF files, you are sharing your images, you are sharing your best wishes. So earlier, if you notice, इस सारा का सारा डेटा हमारे जो मोबाइल में जो फोल्डर होता था उसमें मिक्स फॉर्म में स्टोर होता था. बट नाउ दैट इज, इफ यू सी योर गैलरी, सारी की सारी चीजें अब सेग्रीगेटेड. जिप फाइल अलग सेग्रीगेट है, डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ अलग सेग्रीगेट है. सो दिस इज कि डेटा को आपने एनालाइज किया और उनका पार्टीशन उनको अलग अलग स्टोर करके सेव करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारे जो व्हाट्सएप के यूजर हैं, मैं एक सिंपल व्हाट्सएप का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ताकि हमारे जो व्हाट्सएप के यूजर्स हैं उनको हर एक जो इन्फॉर्मेशन, अगर उनको कोई पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो अपने पीडीएफ फोल्डर में सर्च करेंगे, जिफ की फाइल चाहिए तो जिफ में करेंगे, व्हाट्सएप इमेजेस चाहिए तो व्हाट्सएप इमेज पे सर्च करेंगे. So that means कि WhatsApp is implementing the data handling, algorithms so that it can be interpreted easily. Users can make the decision where they can find their data. So these are the, skills. So once you know the skills, the methods, you can easily analyze and interpret the data. So data skills are now being able to read and understand the world around you.
which is increasingly filled with information. And here is a simplified example of one Netflix example I'm giving to you. See, Netflix use data analysis to predict which movie on TV show user would like to watch next. आप कोई मूवी देखते हो, अगर आपने उसमें भी उन्होंने फिल्ट्रेशन किया हुआ है कि दिस इज एडल्ट मूवी, दिस इज किड्स मूवी, दिस इज क्या नाम है, romantic movie, or this is a action movie. So if you are watching, three, four times, say action movies, so next आपको खुद ही recommend होने लगेंगे, action movies recommend होने लगेंगे. So this is the one. I will give you many of the examples. There the data techniques are being used. So Netflix is one. Analyze your pattern of choice, and based on your choice, it predict the movies जो उसके डेटाबेस में है, एंड इट विल रिकमेंड आप नेक्स्ट और कौन सी मूवीज, और इस तरीके का अट्रैक्शन देना यूजर्स को. देन यूजर्स ऑब्वियस, इफ यू आर लाइकिंग द मूवीज एंड आपके पास जो सीन्स आ रहे हैं, आपको लगेगा अरे ये नेक्स्ट एक्शन मूवी तो और भी ज्यादा अच्छी है, इसमें तो ये वाले हीरो है, दीज आर माय फेवरेट हीरो, सो यू विल पे द मनी. वेदर इट इज, अभी आप देखो कि पुरानी मूवीज भी जो है ना वो पेड है. अब आप कुछ भी, इनिशियली आपको दिखाया गया फ्री में, बट नाउ ऑल द थिंग्स आर पेड, बिकॉज यूजर का जो पैटर्न है, दे हैव एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स पीपल आर एक्चुअली वांट टू इवेलुएट. सो एक नेटफ्लिक्स ही ऐसी कंपनी है जो बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है, क्योंकि आप उसका जो मेन जो ऑडियंस है, जो यूजर्स हैं, जितना अच्छा उनको फैसिलिटेट करेंगे, जितना उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस वो देंगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग. पहले तक हम लोग क्या करते थे, टाटा स्काई यूज करते थे और बहुत सी वैसी चीजें, तो हम सारी चैनल्स हम लोगों को ऑक्युपाई करने पड़, मतलब परचेज करने पड़ते थे, देन वी वर एबल टू. नाउ देयर इज अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द डेटा स्किल्स. दे हैव ऑलरेडी, डेटा तो अब बहुत जनरेट हो चुका है और ह्यूज अमाउंट में है, और उसको बस अरेंज करना, उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना. सो ईच एंड एवरी कंपनी नाउ दैट इज वांट द स्किल्ड डेटा यूजर्स, एंड नथिंग इज टफ. वंस स्टार्टिंग में थोड़े दिन में, मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 या 2 महीने लगते हैं, आप ट्रेंड हो जाएंगे, एंड यू हैव अ bunch of opportunities in this area. This is one of the example. In next, I am be taking the example of Amazon. Amazon is a, first one is a e-commerce service. It gives you, so, from marketing and finance, abhi, nowadays data is being used in every area, whether it is a marketing, whether it is a finance, whether it is a healthcare, education. So data plays a main role to optimize the operations, to optimize the, business of these areas. Amazon is one of the another example. What Amazon is doing? It uses the data for the customer browsing pattern. Whatever you are browse on Google, on any internet service, even you are browsing on Chrome, or so, based on your pattern, whenever you are searching the any e-commerce or any commerce website, so it suggests you accordingly what type of product, what type of things you are asking. अभी तो ये हो गया है कि अगर आप बात भी करते हैं तो आपका वॉइस इज ऑल्सो अ डेटा. इट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द गूगल, क्योंकि हम जितने भी एप्स अपने डिवाइस पे डाउनलोड करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनको परमिशंस देते जाते हैं, और परमिशन देने के बाद दे आर कलेक्टिंग द वॉइस एंड दे आर कलेक्टिंग द कीवर्ड्स, एंड you see that automatically you are getting suggestions on the WhatsApp, and you open the Google, you are getting the suggestions on that particular topic which you are discussing. So they all are collecting the data. Data may be in the form of voice, data may be in the form of images, maybe in the form of text, maybe in the form of GIF, or your browsing pattern. So Amazon is also using the data pattern for customer browsing pattern to adjust the pricing in real time and recommended product. आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हो, आपको वो अलग कॉस्ट पे शो हो रहा हो, एंड दूसरे यूजर्स देख रहे हैं, उनको अलग कॉस्ट पे शो हो रहा हो? इट इज हैपनिंग नाउअडेज. इट इज हैपनिंग. सो इफ द यूजर इज सेम विद अनदर उबर, एंड जितनी भी हमारी ये जो कैब सर्विसेज हैं, they are also varying, according to time and according to your search, they are also changing their pricing. So
अब जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी कंपनीज हैं, उनका जो मेन टारगेट है वो यूजर है, और यूजर का जो ब्राउजिंग पैटर्न है वो उनका डेटा है, वो उनका फ्यूल है। एंड बेस्ड ऑन द ब्राउजिंग पैटर्न एंड द यूजर बिहेवियर, दे आर एक्चुअली वेरिंग देयर प्राइसिंग। तो वहां पर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक एक बंच ऑफ कस्टमर्स के ऊपर उन्होंने डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालाइजर्स लगाए हुए हैं। दे आर चेंजिंग द प्राइसिंग अकॉर्डिंगली। So this is also, they are also, if you are search one thing, they recommend you another product. उनकी sales भी increase हो रही है, and how these things are being managed, just because of the data, your browsing pattern, the main data fuel for all the e-commerce and commerce services. So this also helps to boost the sales and improve the customers. आपको satisfaction मिलेगा कि अरे मुझे, I'll take one example. Suppose मैंने गार्डन के लिए सोचा कि लाओ आज मैं कुछ थोड़े से, मैं ये करती हूँ गार्डन के लिए, आज थोड़े से कुछ सीड्स खरीदते हो। तो सीड्स तो खरीदे खरीदे, साथ में उन्होंने मुझे और अट्रैक्टिव सी चीजें कि आप ये प्लांटर भी ले सकते हैं, ये रोपिंग टूल्स भी ले सकते हैं, ये ग्लव्स भी ले सकते हैं। तो आप लेने तो एक चीज गए थे, क्योंकि अभी यूजर मार्केट में तो जाता नहीं है, मार्केट में तो सारी चीजें ओपन होती हैं। आप एक चीज सर्च करोगे, 10 चीजें आपको दिखेंगी तो आप खरीदोगे। यूजर ने जाना तो बंद कर दिया है। तो बेस्ड ऑन योर चॉइस, choice is your data, your browsing pattern is your data, and based on your browsing pattern, so another things are being recommended to you. आप मार्केट नहीं भी जाओ फिर भी आप खरीदोगे, एंड दे आर गिविंग यू अट्रैक्टिव ऑफर्स इन यूर, इवन दो आपको नहीं भी जरूरत है फिर भी आप खरीदोगे। तो जिनको नॉलेज नहीं है डेटा साइंस की, तो दीज पीपल आर बीइंग अभी अनएजुकेटेड, जो 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 अनअवेयर है, नॉट टू से अनएजुकेटेड, जो नॉट अवेयर है कि कैसे डेटा स्किल्स जो है वो पूरे मार्केट को या पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर रही हैं, एआई ड्रिवन हो रहा है। वंस यू आर अवेयर, यू नो, तो आप स्ट्रिक्ट हो, आपको जो चीज चाहिए आप वही लोगे। इफ यू आर नॉट अवेयर, तो यू विल बी फैसिनेट, वाओ दिस इज अ वेरी गुड ऐप, दिस विल गिव इसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, मुझे तो सोचना ही नहीं पड़ रहा है, दिस टाइम ऑफ थिंग। तो व्हाट दीज कंपनीज आर बीइंग डूइंग, डेटा स्किल्स का जो मेन, जो इम्पोर्टेंट, जो फ्यूल है, जो फंडा है, वो ये है, दीज पीपल आर फर्स्ट कलेक्टिंग योर डेटा, गैदर द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सोर्सेस यूजर्स हैं, हमें लोग हैं, on each and every source first collecting the data on, किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो सबसे पहले आपका डेटा ना ले, और वो ऑथेंटिक कर लेते हैं कि यस यू आर द यूजर, सो दे आर वेरीफाइंग विद द ओटीपी, एंड देन दे आर कलेक्टिंग द डेटा। And then whatever app, whatever services you are using, they apply the methods and algorithms to uncover the trends and patterns, to analyze your, your behavior, your understanding, and then according to your behavior, analyze, they interpret what makes sense of data to inform decision, what kind of decision they can be taken. And they need also the communicate person that present data effectively to the stakeholders. So एक तो डेटा है आपसे जो कलेक्ट हो रहा है, दूसरा जो अमेजोन पे ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं या नेटफ्लिक्स पे जो ऑलरेडी मूवीज हैं, these are also a data. So what kind of data should be provided to what kind of stakeholders? We people are actually the stakeholders, the users. Okay. So for any company, for education system, the students are the stakeholders. For companies, the employees are the stakeholders, and their customers are the stakeholders. So the proper communication is the required. Another example which I have incorporated here is a Uber. Uber uses a data skill to analyze traffic pattern, predict the demand, and optimize the driving route, and then improve efficiency and customer experiences. I hope you understand this. This actually collect the data for analyzed traffic. If you see how the Uber is work, Uber is basically collecting, they are getting the route from the Google Map, and Google Map is collecting वो रूट कहाँ से ले रहा है, वो रूट लेता है आप ही लोगों से। जितने भी रोड पर जो डिवाइसेस चल रहे होते हैं, अभी हर एक के डिवाइस में इंटरनेट है, ईच एंड एवरी डिवाइस इज अ नोड। अब देखो वो जो आपको रूट शो हो रहा होता है ना, वो दिखाता है कि उस रूट पे कितने नोड्स ऑनलाइन है, और उसी से ट्रैक कर करके वो रूट जनरेट होता है। एंड
then you are getting the traffic is being analyzed कि किस route पे कितने number of nodes ज़्यादा हैं, किस route पे traffic ज़्यादा है. It will give you suggest accordingly. It predict the demand and optimize the driver routes. See, Spotify is one of the another example. See, use data to clean and analyze listening habit. If you are listening, say, Jagjit Singh song, or if you are listening, say, another singer song, so it will automatically suggest you a kind of personalized playlist, and it will suggest you the advertisement accordingly. If you are, love to listen music, so in the advertisement, you will be get the, some advertisement of speakers or headphones, which will enhance your listening personality. So what kind of things, habits you interested? So it actually analyze the user behavior and then create a personalized system and then recommend the ads accordingly. तो अभी ऐसा नहीं है जैसे पहले एडवर्टाइजमेंट सभी को दिखाए जाते थे. अभी ये कि किस पर्टिकुलर यूजर का क्या इंटरेस्ट है उसका डेटा कलेक्ट किया. देन दे हैव आल्सो अगेन द डेटा ऑफ द वेरियस एडवर्टाइजमेंट कौन से किस तरीके की चीजें हैं, बुक्स से रिलेटेड है, कोई पढ़ने का शौकीन है तो उसको बुक्स के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कोई मूवी देखने का शौकीन है तो उसको टीवी और स्क्रीन के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं कि आप ये भी परचेज कर सकते हैं. सो दैट इज अ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, पर्सनलाइजेशन ऑफ एक एक कस्टमर पे आपका फोकस होना. सो दैट इज द थिंग. And all these things needs involvement and ability to understand, analyze, and apply data effectively. So each and every area, the data skills are required. क्योंकि जितनी भी कंपनीज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे और सब ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं. पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम फिजिकल मोड टू ऑनलाइन मोड. And in a coming time, this will happen. The corona gives you one of the trial testing phase where they have seen that how the online system will work. And आप देखेंगे धीरे धीरे करके चीजें शिफ्ट होंगी और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा होंगी. एंड क्योंकि सब ऑटोमेशन और एआई जनरेटेड होता जा रहा है. एंड फॉर एआई द डेटा इज अ फ्यूल, and for data analyzing, the data skill is a main thing. So once you understand these things, data skills also need some technical skills and then soft skill. टेक्निकल स्किल्स में चीजें आ जाती हैं कि डेटा को कैसे एनालाइज करना है, कैसे विजुलाइज करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है. I'm taking one example. अगर मैं आपके पास कोई एक टेबलर फॉर्म में डेटा लिख के रख दूं तो आपको भी समझ में ही नहीं आएगा कि इस डेटा में मुझे क्या देखना है, ये डेटा क्या कहना चाह रहा है. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. But the moment I draw a bar graph, I put a x-axis and y-axis, you will see कि अगर x बढ़ रहा है तो y इधर जा रहा है. You can easily visualize the things. This is one thing. तो कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में है क्योंकि जो यूजर का बिहेवियर है वो विजुअलाइजेशन से ज्यादा अच्छे से समझता है. So that is a one area where with the help of visualization you can analyze, and company need the people. They just want कि हमारा जो ये डेटा है उसको हम कैसे विजुलाइज कर पाए. So the skill data scientists are required. Again, a tabular form data is very much difficult to understand. So उसको अगेन एनालाइज करने के लिए दूसरी चीजें हैं कि अगर रोज एंड कॉलम्स इजीली डिफाइंड हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन उससे आप निकाल के दे रहे हो. ठीक है. अगर आपने उसमें बिल्कुल डेडिकेटेड लिख दिया, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल से यूजर डेटा, मतलब पेशेंट डेटा. आपके पास एक टेबल ऑफ फॉर्म में है कि अगर ये एज है तो इतना हेल्थ पे मतलब ब्लड प्रेशर है, इतना 3-4 चीजें हमने मेजर कर ली. ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, हीमोग्लोबिन मेजर कर लिया, एंड सी ऑक्सीजन लेवल मेजर कर लिया, पल्सेस मेजर कर ली. एंड लेफ्ट साइड पे आपका एज ग्रुप लिखा हुआ है एंड दूसरे साइड पे आपकी ये सब चीजें लिखी हुई. तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप में मैक्सिमम लोगों का बीपी ब्लड प्रेशर इतना है, इस एज ग्रुप में ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट इतना जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर. And accordingly, all the areas are being worked with. And soft skills are the thing which require the critical thinking and problem solving. See, the people are also required कि आपको डेटा एनालाइज कर लिया पर दूसरे को समझाने के लिए भी चीजें चाहिए. So here you need the soft skill.
मैं तो उनको मतलब सारा में इनसे बोलूंगी कि आप एक ना सॉफ्ट स्किल का भी अपने में रखिए डोमेन। इट इज वेरी मच एंड इट इज क्योंकि किसी भी जॉब और अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एक डोमेन भी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी एक अलग डोमेन ही होता है वो पूरा, जिसमें आपको चीजों को एक्सप्लेन करना, मतलब वो डेटा के अंदर ही आता है। आप डेटा को वन ऑफ द डोमेन, किस तरीके से किसी डेटा को एनालाइज करना है, उसको एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें। अब जो कोर डेटा स्किल्स हैं वो उनकी डिमांड क्या है? कोर डेटा स्किल्स में आता है कि डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताया कि डेटा स्किल के जो डोमेन है, मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो डेटा स्किल के बिना चल रही हो। ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, यू टेक द नेम ऑफ द इंडस्ट्री कि मैडम यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होगा, आई गिव यू द एग्जांपल। अगर किसी को भी ये क्वेरी हो एट द एंड यू कैन आस्क, तो ऐसा कोई डोमेन नहीं है जहां पर डेटा स्किल्स नहीं एप्लीकेबल हो रही है। आगे आने वाले टाइम में नो डाउट ह्यूज डिमांड होने वाली है। एंड जो आपने ये ओपन किया है ना कि इट इज डेडिकेटेड फॉर द डेटा ट्रेनिंग ओनली, सो इट इज वंडरफुल। सो जो कोर डेटा स्किल्स हैं, इट रिक्वायर्ड द डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, व्हाट्सएप पे पहले जब व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था, तो उसमें इतना मतलब वो फोल्डर्स नहीं थे कि हर एक चीजें अलग अलग क्लीन हों, अलग अलग कैटेगराइज हों। तो सिर्फ डेटा आ रहा, डेटा में देखा गया कि जो यूजर्स हैं उनका जो यूजर पैटर्न है वो था कि मॉर्निंग विशेस और ये बहुत ज्यादा आते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज बीइंग जनरेटेड। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। इफ आई सी अनदर एग्जांपल, फिर लोगों ने जिप फाइल शेयर करना, पीडीएफ शेयर करना। तो आगे आगे एल्गोरिथम्स इतनी इम्प्रूव हो गई कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है ना, तो उसको क्लीन किया गया। क्लीन इन द सेंस कि दे मेड द डिफरेंट फोल्डर्स वेयर योर इमेज फाइल्स। आप देखिएगा, चेक करिएगा अपने व्हाट्सएप के अपने फोन की गैलरी में चेक करिएगा कि अब उसमें मल्टीपल फोल्डर्स आते हैं, जहां पर आपकी जिप फाइल्स अलग हैं, आपके व्हाट्सएप की इमेजेस अलग हैं, आपके कैमरे से क्लिक की हुई इमेजेस अलग हैं। सो दैट मीन्स नाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज क्लीन। आप इजीली उसको चीजों को कर सकते हो। एंड देन आपने देखा होगा गूगल रिकमेंड करता है, अगर आपने एक साथ 4 इमेजेस ली हैं, तो ऑल्सो गिव्स यू अ सजेशन कि 4 इमेजेस एक ही तरीके की हैं, यू कैन डिलीट एंड यू नो अपना जो स्टोरेज है उसको आप खाली कर सकते हो, इन द सेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमेज ब्लर हो गई, कुछ हो गई, तो मल्टीपल इमेजेस हम क्लिक करते हैं और हमारे फोन में डेटा स्टोर होता चला जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लिनिक। अननेसेसरी डेटा को रिमूव करना, यूजलेस डेटा को रिमूव करना, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। सो दिस ऑल्सो नीड्स द एल्गोरिथम्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। क्योंकि एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, सारा का ही लेती हूँ। सपोज करो कि सारा ने एक गूगल फॉर्म कोड किया जिसमें यूजर्स को अपना इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो यूजर का पैटर्न है कि हर एक यूजर में भी कुछ सही से स्पेलिंग लिखेंगे, कुछ नाम और सरनेम के बीच में, योर नेम एंड सरनेम के बीच में पीपल आर गिविंग स्पेस, पीपल आर गिविंग बर्थ डेट लिख रहे हैं तो स्लैश दे रहे हैं, कुछ हाइफन दे रहे हैं। सो एक डेटा को ऑर्गेनाइज वे में क्लीन करना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द these things are not now manual. You need to understand the algorithms. आपको ऑटोमेटिकली algorithms आनी चाहिए, उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये आना चाहिए। Then the another core skill is data analyze and interpretation. फिर आप डेटा को एनालाइज कर पाए, पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा को क्लीन किया, ऑर्गेनाइज किया, दिस इज वन ऑफ द टास्क। Another task is the analyzed data should the organized data should be analyzed and interpret, कि वो बता पाए कि ये डेटा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वेदर ये यूजर पैटर्न बताना चाह रहा है, वेदर ये पेशेंट का इलनेस बताना चाह रहा है, या ये कस्टमर का ब्राउजिंग पैटर्न बताना चाह रहा है, या उसकी परचेजिंग का इंटरेस्ट बताना चाह रहा है। सो कुछ मीनिंग निकल के आना चाहिए डेटा का। एंड इफ इट इज मीनिंग निकल के आने के बाद आपको कम्युनिकेट भी करना है कि जो भी कोई देखे उसको समझ में आए। सो दैट कम्स अंडर द डेटा विजुअलाइजेशन। वंस यू अंडरस्टैंड द डेटा एंड हाउ यू आर विजुअलाइजिंग, तो द मोमेंट, क्योंकि पहले स्टार्टिंग का कुछ काम कर लिया, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, डेटा जो डेटा के मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने, तो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। सो द पर्सन हु इज वॉचिंग द ग्राफ्स, they can easily be, oh, इस एज ग्रुप में तो इतना पीक जाता है, और दिस इज द हाईएस्ट
say example, any of this. So the visualization is again important. The fourth thing comes the data-driven decision making. So data-driven decision making again, there needs the experts. आपके पास कोई चीज जनरेट होके आ गई, फिर उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले रहे हैं. सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल हियर ऑफ हेल्थ केयर. तो हेल्थ केयर में आपने पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया, क्लीनिंग किया, एनालाइज किया. ओके, इस एज ग्रुप में इतना ब्लड प्रेशर गया, इस एज ग्रुप में इतनी पल्स रेट गई, ठीक है. फिर उसको विजुलाइज करके ग्राफ की फॉर्म में शो कर दिया. एंड द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकर हु इज हियर, द डॉक्टर्स. सो वंस द डॉक्टर्स विजुलाइज द डेटा, तो डॉक्टर्स जो विजुलाइज कर रहे हैं उससे पहले जो काम किया हुआ है वो डेटा साइंटिस्ट ने किया हुआ है. And based on the visualization, the doctor is taking the decision that okay, इस एज ग्रुप में इतना ज्यादा पीक जा रहा है, so that medicine should be recommended. Once you recommend the medicine, there are the companies which are making the medicines. So again, we are collecting the data. इस medicine में इतने सारे salts हैं, they gives you alternative medicines. तो doctors को और suggestions. So this is one of the general example. एंड देन देयर इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मॉडलिंग. तो जब आप ये सब चीजें समझते हैं किसी भी पर्टिकुलर डोमेन की, देन यू आर राइटिंग द पेपर्स, मॉडलिंग, उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना, तो दैट कम्स अंडर दैट कोर स्किल. सो दीज आर द मेन 5 core data skills which are required. Yes. Then, other than that, we need the technical and soft skills. Technical skills may how we do all these things, then we need the tools and techniques that will work on the data. Some of the techniques are, SQL techniques, Python, Excel, statistical softwares are there. तो किस तरीके से हम उस पर वर्क करते हैं, क्योंकि सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल. इफ अगर हम कोई गूगल फॉर्म से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक्सेल की ही फॉर्म में आता है, एंड देन उसको ऑर्गेनाइज करना, देन एनालाइज करना. सो टेक्निकल स्किल्स में सारी चीजें आ जाती हैं कि व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स. तो जहां पर भी आप डेटा स्किल्स की चीजें सीखेंगे, आपको वो टूल्स और टेक्निक सिखाए जाएंगे. तो दीज आर द कोर टेक्निकल. एसक्यूएल है, पाइथन है, some statistical softwares are there, R programming है. So these are the things. सॉफ्ट स्किल्स में चीजें आ जाती हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग. एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आप को रिलेट कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से. को रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इस से अमेजोन का जो डेटा है वो किस तरीके से बिहेव, किस तरीके उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका टेक्निक क्या है. हेल्थ केयर का जो डेटा है वो उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और उसको फिर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, उसके बारे में अच्छी से इंसाइटफुल जानकारी देना. दैट कम्स अंडर दैट द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग. हियर आई हैव टेकन वन अनदर एग्जांपल ऑफ फेसबुक. फेसबुक में जो डेटा इंजीनियर्स हैं, दे नीड द टेक्निकल इंजीनियर्स टू वर्क विद द बिग डेटा. आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूजर्स जो अगर किसी कंपनी के या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैं, तो वो फेसबुक है. फेसबुक के पास मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा है. Millions of users are writing text messages, writing their feelings, या तो हैशटैग का भी ट्रेंड्स है, व्हाट टाइम हो गया, हैशटैग के ट्रेंड्स हैं, एंड दे आर राइटिंग, दे आर डिप्लॉइंग देयर इमेजेस. अभी तो ई कॉमर्स और मार्केटिंग भी शुरू है फेसबुक पे. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन. और इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कोई एक सिंगल इंजीनियर, सिंगल डेटा साइंटिस्ट नहीं हैंडल कर सकता. Millions of users of data is there. So the Facebook engineers need the technical skills, still need the technical skills to work with the big data, but also soft skill to collaborate with marketing teams and communicate their findings. Okay, so these are the things which are required. And based on these all the things, there are the data-driven decision-making leaders. They take the ability to make decisions based on the insight of data rather than the intuition and guesswork. कोई भी guesswork नहीं है. सब कुछ जो है वो आपके डेटा को एनालाइज करके ही आपको एक तरीके से सर्व किया जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज रैंडमली क्लिक की और आपके पास कुछ भी आने लगा. नो, नथिंग.
Whatever you are talking, whatever you are searching, each and every click, each and every word, each and every response of your internet is being collected, and it is being analyzed. उसको पूरा अंदर तह तक उसका एनालिसिस करना, एंड देन आपके पास वो चीजें जो है वो सर्व हो रही है. सो दिस इज नॉट इंट्यूशन. ऐसा नहीं है कि किसी को लगे कि अरे मैं तो आज ये सोच रहा था और ये मेरे पास अचानक से मैसेज आ गया. ऐसा नहीं है. या मैं अमेजोन पे कुछ चीजें देख रहा था, अरे आज तो बहुत अच्छी एक चीज क्लिक हो गई. आप इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई वीडियोस देखेंगे तो आपसे आपके पास उसी से रिलेटेड वीडियोस और उसी से रिलेटेड मीम्स आने लगे. इफ यू आर वॉचिंग सम पॉलिटिकल कंटेंट तो आपके पास पॉलिटिकल कंटेंट आएगा. इफ यू आर अगर आप जोक्स देख रहे हैं तो आपके पास जोक्स के कंटेंट आएंगे. तो ईच एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, whatever, e-commerce services, education services, everything. So यहाँ एक और एग्जांपल स्टारबक्स का है. स्टारबक्स, if you heard, Starbucks is basically a company which is very high standard. उसका बड़ा प्राइसिंग बहुत हाई है. सो इट ऑल्सो यूजेस, मतलब हाई प्राइसिंग पे भी वो अपने यूजर को एनालाइज कर रहा है, डिटरमाइंस द स्टोर लोकेशन एंड ऑप्टिमाइज देयर इन्वेंट्री. अरे इस लोकेशन पे मेरा जो यूजर है वो, से सपोज करो कि सीपी में कनाट प्लेस में स्टारबक्स का एक कॉफी शॉप खुला हुआ है. और दे सेइंग कि अच्छा अगर मैं किसी ऐसे जोन में खोलता हूँ तो वहां पर मेरा फुटफॉल कम है, किसी ऐसे जोन में खोलता हूँ लोकेशन पे तो वहां मेरा फुटफॉल ज्यादा है. तो बेस्ड ऑन देयर फुटफॉल दे आर ऑप्टिमाइजिंग देयर इन्वेंट्री, कि कहाँ पर किस तरीके की इन्वेंट्री, कहाँ मुझे ज्यादा इन्वेंट्री भेजनी है, कहाँ मुझे कम भेजनी है. वो भी एक अपने आप में डिसीजन टेकिंग टास्क है. सो दैट इज ऑल. तो मैंने ये इतनी सारी कंपनीज के एग्जांपल इसीलिए लिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी नहीं है जो डेटा स्किल्स से दूर है. सो वी नीड द ट्रेन डेटा स्किल्स यूजर्स, एम्प्लॉयर्स एक्चुअली. कैसे कर सकते हैं आप डेटा स्किल्स की ट्रेनिंग? हमें ये तो पता चल गया है कि नथिंग इज अनटच्ड विद द डेटा स्किल्स. ईच एंड एवरी फील्ड इज, you know so where we can do this, there are some paid organizations, there are some unpaid, and there are some SARA kind of organizations which gives you free of cost training of technical and soft skills. And after that I was just discussing the how the Starbucks is using the data analytics to determine the store location and optimize the inventory. Okay, so for that the simple thing is we need the we should start the learning data skills without wasting time. This is a peak time to start the data skills. The BCA students can start the any of the area. It is not required that you should be a BTech and you must be engineer. So you can take the data skills training from anywhere, and then you can learn all these things. Once you understand the how the data is collected, how the data is analyzed, how the data is visualized, how these algorithms work. So it's a matter of 2-3 months and the matter of practice. Once you do all these things, so huge amount of area and domain will be open for you. You can easily identify skill relevant to your industry. So see, if you are working in a healthcare, so you can do the practice of data skills on the healthcare related applications. You can start with the free and affordable resources. Online resources are available, tutorials are available, and the one of the example is also the SARA, which doing a wonderful job to give the training on the data skills sets, and do lots of practice and hands-on with the real world data set. I am able to explain you all these things because many of the till now uh, I have teach around 400 dissertation students, and they all work in the machine learning and Python algorithms. However, my area was communication networks. Even though I later on learned all these things, and then 400 plus students have done their dissertation on that particular area, how the data is being handled and analyzed, what are the data skills training. So nothing is tough. It is very easy and easily understandable. You can do lots of things.
So the major part comes to understand the basic concepts, what we have to, from where we have to start. See, we have the data, which is in three forms. The data is in the form of structured data. I'll take the very fundamental things, and I'll not teach the data skill. I'll just let you know that how the data, how the data plays the game. So data is in the three forms only. It is structured, it is unstructured, or it is semi-structured data. The example which I am taking again and again, that earlier the WhatsApp is collecting the data that is unstructured. Data that does not fit neatly into a table, social media post, video, email. Everything is, mix. So that is a unstructured data. And once you structured and organize the data in the rows and column, like database, you can create the spreadsheet. That is a form of structured data. तो अगर data structured है, organized है, तो आप उसको easily समझ सकते हैं. There is a kind of semi-structured data that contain the structured and unstructured both. It's example of XML files and JSON data. So we need the people which can handle all three kinds of. So your browsing pattern is an XML files, your IP address and the roots. So that is the one. आप किसी particular domain को सीखेंगे तो particular domain की ही training आपकी हो जाएगी. Here again I have taken the example of Twitter. Twitter is actually having unstructured form of data. Lots of tweets are there, lots of posts are there. Post covers the images, photographs, and it also uses the semi-structured data. That is a hashtag and mentions. So the four kind of data is already there. The tweets, where you can categorize and analyze the sentiments. Emojis are there. The post have some keywords. So based on the post and the keywords, the data is being analyzed कि क्या trend चल रहा है अभी दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्या चीजें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं या क्या चीजें जो लोगों को अच्छी लगती हैं. तो बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स ओनली द डेटा इज एनालाइज एंड ट्विटर इज कोई भी जो ट्रेंड है वो चलता है. बट ऑल्सो यूजेस हैशटैग दिए. जैसे सपोज करो अभी एक वो डिलीट ट्रेंड चला हुआ है जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी कोई भी इमेज डालते हैं चैट जीपीटी एंड वो कार्टून की फॉर्म में आपकी जनरेट हो जाती है. So this is again collecting your images data and giving you toon images and hashtag हुआ है वो Google पे trend. So this divinity trend is also there. So analyze करना फिर उसको कि कितने लोग हैं जो अनअवेयर हैं जो इन चीजों को कर रहे हैं and what can be later on उसका क्या यूज हो सकता है वो देखिए आगे निकल के आएंगी चीजें. So based on that. So next slide is टेक्निक्स हो गई. तो हमारे पास जो टूल्स हैं दैट इज एक्सेल, एसक्यूएल, दिस इज अ रिपीटेशन. वी यूज द पाइथन, आर, टेबुलो, पावर बीआई. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेटा स्किल जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं वो इन सब टूल्स पे कराते हैं. इन्हीं टूल्स के बेसिस पर ही वी कैन ऑर्गेनाइज, we can arrange the data, we can analyze, we can structure the unstructured data. So these are the tools which we are using. And one has to know for the data skill training. This is another example. I have taken examples more. So healthcare I have already covered. The medical analysis for better patient outcomes. Finance may be used there, that is the risk assessment and fraud detection. Portfolio management. Okay. Then marketing is also using the data for target companies and customer behavior analysis. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑल्सो यूजिंग द डेटा ट्रेंड कि किस चीज की मतलब डिमांड ज्यादा है तो उन्हीं चीज की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है. एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग द सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन. सो ईच एंड एवरी I'll tell you, no domain is being untouched. So that is again and again being covered in this presentation or in this talk. देन आपका जो डोमेन आता है कि जो 5 मेन कोर डेटा स्किल की रिक्वायरमेंट है उसमें एक मेन आ जाती है डेटा एनालिसिस टेक्निक्स. सो दिस इज a separate domain where you can descriptive analyze, you can provide a diagnostic analysis, you can provide the predictive analysis. So those who have an interest in statistical analysis, they can go in depth of analysis only. They don't need to arrange data, they don't need to collect data, they don't need to
this is one of the domain where the analysis is most important. So already historical data we have, there are the people and the engineers who are organizing the data. Analysis is one of the major part. Um, and later on, जैसे जैसे डेटा की चीजें इंक्रीज होंगी, we are coming to the machine learning, big data, and AI, artificial intelligence. We are coming in the time. दूसरा एग्जाम्पल एक और यहाँ पर है, that is a driverless vehicle आगे आने वाले टाइम में. The driverless vehicle is also working on much big data. This is also a game of the data. So how the car is being without driver is working. So maybe some data is something is analyzed, road pattern is analyzed, the traffic is analyzed, and based on the analyze, the algorithm is fitted in the car that when to where we when to put the brake and when to speed up if the road is free. So based on all these routes are being defined. So that is one the future, that is where the data skill is being applicable. Now the most important part, once you understand the data skills, what are the roles and what are the areas where you can work. So one of the area after learning the data skill is data analyst. ये तो हमें पता चल गया कि what we can do and what we can achieve, what are the areas and domain, and what will be the opportunity we will get after completing this. So the what is the key responsibility of analyst is they have to be analyze and interpret data to inform the business decisions. So every kind of business have a different kind of decisions. So there are various roles, there are various openings on the data analyst in each of the every organization. And this needs only the SQL, Excel, Python, communication, and statistical analysis. Once you learn any of the one or two skills, you can easily become a data analyst. Just to analyze and interpret data and then inform the business decision makers. Here I have taken example of LinkedIn. LinkedIn employ data analysts. ये recruit करते हैं LinkedIn वाले to help business understand hiring trends. क्योंकि जितनी भी हायरिंग है वो LinkedIn के थ्रू होती है, ठीक है? तो LinkedIn पर सारी कंपनीज हैं. They analyze the employee analyst to help the business understanding hiring trends and improve the data recommendation. So this is one of the example. Same with the another. ठीक, और जितने भी हमारे जॉब ओपनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पर सभी जितने भी हमारे बिजनेस ओनर्स हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे पोस्ट देयर रोल्स ओवर देयर and by analyzing the analysis, so data analyst is helping in that area. Another domain is data scientist. The main role of data scientist is focus on advanced data modeling and machine learning methods. So this is you have data and you have analyzed. So this will gives you a business model कि अभी हमारे पास अगर इस तरीके के यूजर्स की डिमांड इस प्रोडक्ट पे ज्यादा है, तो इन फ्यूचर में हम अगर इस प्रोडक्ट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लें, इसकी और ज्यादा अगर हम वी आर गिविंग ब्रिजिंग गैप बिटवीन बिजनेस गोल. तो बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस गोल क्या, एवरी बिजनेस वांट कि उसका बिजनेस जो है वो पीक पे जाए. तो पीक पे अगर कोई सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट में और कितना इम्प्रूवमेंट करें और क्या चीजें उसमें इनहेंस करें कि जो यूजर्स है उसका जो इंटरेस्ट है उसमें और इनहेंस हो. सो बेस्ड तो so here is a role of data scientist. This is one example. The data scientists focus on require advanced knowledge of statistics, programming, and then data engineering. So if a student or if a person is having the knowledge of his statistical techniques, some programming techniques, some data engineering techniques, they can easily be appointed as a data scientist. Spotify is one of the example which employed a data scientist to build recommendation system. Each and every organization is appointing the recommendation system. So
I have taken just a Spotify. Here is a Amazon. Here is a Netflix. Here is a major companies. They are every company needs a recommendation system. Then there is a roles of data engineers. Data engineers build and maintain the infrastructure that allow data to process. Infrastructure means the huge amount of data is somewhere stored. Our mobile phone, our laptops are not able to store that much amount of data. So there are the cloud platforms, AWS, Azure. These are the platforms where the huge amount of data is being stored. Then the data is, arranged, organized. Then some algorithm is being implemented and then analyzed. Okay. So the main role of data engineers to build and maintain the infrastructure that allow data to be processed and accessed by data scientists and analysts. So data engineers only just to handle the cloud platforms, data pipeline decisions, and then this data is accessible to data scientists, and then this data is being accessible to the data analysts. So these all roles are being interconnected, you see. So the major roles are data analysts, the data scientists, and the data engineers. And then there is a data-driven leadership also. The leaders must understand how they interpret data, trust insight, and that can make informed decisions based on data rather than intuition. That point I have already covered the previous slide also. So that is being done by the data-driven leadership also. So this comes over all the three roles. This also encouraging a data-driven culture within the team and can lead to better collaboration and more effective decision making. All right. So in future, there will be more requirement of data skill people. There will be more, openings for the remote works. And these remote work environments require individual to manage, analyze, collaborate on cloud data from anywhere. They can do remote job. So data skills की जो जॉब है वो ऐसी नहीं है कि आपको पर्सनली जाकर ऑफिस में वर्क करना है. So data is क्योंकि devices पर तो इतना big data huge amount data आएगा नहीं. So there are the openings and the data engineers who are working on that, they are getting a good number of salary in terms of salary. So this is the main core domain area. And there are the common platforms where these people are working, data engineers. There is a GitHub platform where you can collaborate and work, virtually. The remote workforce will collaborate on. There is a kind of virtual offices. GitHub is a kind of virtual office. We can say that because people are working from their own place and they are collaborating on a GitHub cloud, and then they are working on the projects. They are giving the solutions to the companies using cloud-based tools like SQL, Jupyter Notebook, and ensuring the efficiency and security that comes another part of the data. That is a so I'm not touching the security part right now. I'm just giving the brief of what are the opportunities in that area, what we can become after completing uh, this technique that calls data skill training. So that is very fascinating nowadays. So there is a huge amount of data skill in the job market. The growing demand for data professionals. Companies are looking for individuals who can make data-driven decisions. Companies are looking for data skills for various roles such as data analyst, scientist, engineers, business decision makers, where who have the knowledge of businesses also, intelligent developers who have the knowledge of website development and then visualization of data. So right now, if you see many of the companies are providing the data skills training. IBM is offering data skills training. Infosys is offering because in the coming time there will be a number of openings will be there. And even right now they are there.
but there is lack of data skill people. अभी लोगों की कमी है, जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल्ड लोगों की कमी है. So once data skills people are there, so many companies are offering training programs, certifications to help people to work for the data centric roles. And uh, SARA is also working on that particular domain because knowing the future and knowing what the future requirement, I'm very thankful to SARA that they have identified the core domain area that will be the future of, and we people need the such kind of training. And it doesn't require any BTech degree. I'm again telling you, it doesn't require any additional mathematics knowledge you have. What it requires continuous training and then presentation, soft skill. So because company needs the English speaking persons. Even though I have in between use very much often uses the Hindi, and I would like to, क्योंकि अगर मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मुझे कंफर्टेबल लैंग्वेज में देनी चाहिए ताकि अगले को वो समझ में. बट इसका मतलब ये अगर आप कंपनीज भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी अगर आप अपने डेटा को हिंदी में समझा पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना, इट इज इट इज द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग. यू एनालाइज द डेटा एंड देन यू एक्सप्लेन किस तरीके से आगे कंपनीज, किस तरीके से आगे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकते हैं. सो विद दीज टू स्किल्स people can achieve good roles and good things. So yeah, there is a future of data. AI and automation will shift some data roles. Maybe something will be automate in future, but not right now. Technology is evolving very fast, no doubt. But demand for skilled professional will always remain high. So new roles like AI specialists will be open after that. Automation engineers will be open after that. But that is the future. And once you know the data soft skill or data skill trainings, then you can easily you easily catch all these skills also. So for a beginner level, if I'll tell about the learning pathway. So for beginner level, you can do Excel, Google Analytics, basic Pythons. And if you want the intermediate kind of job roles, then you should focus on the SQL trainings, data visualization, and data analytics tool. And if you need, and if you have already these two beginners and intermediate, I recommend you go with the machine learning, big data, and data engineering tools and techniques, where that is advanced level and where you can achieve, good roles in a company and you can have a good amount of salary package CTC over there. So the future is all bright in the data skill, no doubt. So future is machine learning, big data, and AI, and companies are using. And this is the later on phase. So that is. And let's have a great learning of data skill in SARA or whosoever are joining. And I'll request all those who are joining may also अपने नोन में जितने लोग हैं उनको भी बताइए कि ये जो ट्रेनिंग है इट इज मोर रिक्वायर्ड. बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली कोर्सेज करें और बहुत कॉस्टली. सो ट्रेन अमाउंट लोग हैं, लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल बनाइए, प्रोजेक्ट करिए डेटा स्किल्स के, एंड देन उसको शेयर करिए, and you will have a great learning and great job opportunities. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your Thank you, ma'am. talk. And we are really honored to have you. And, and this session, with making some changes where, we got little glitches, we will update on the YouTube as well, on the SARA YouTube channel, so that other students can also get benefit from your this great session. And so see, you other students like ma'am helped us, SARA to SARA. You can also help us. You can teach at SARA, like ma'am have taken a session. So if with your expertise, you can also take session for the SARA students and help us. And we strongly recommend and request, politely request, if you can, we sustain with the donations from the community. And in the teaching also, we are open for all, and almost course is free for all, and except food and accommodation, because that we cannot provide right now free.
बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, एनी अमाउंट इज इट्स सिग्निफिकेंट, सो प्लीज यूज दिस QR code and you can give donation to the SARA. And if you give some amount, so you can also get tax benefit also under the ATG. And these are our social media channels. And after this presentation, I will also share the link of these slides with you in the chat itself, so all of you can click on that link and the slides will be with you. So all this information you can see again also, and all these links you can follow, and they will take you to the like Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, and SARA WhatsApp channel. And this is our email and our website, and this is our address in Sonipat. So we were extremely thankful to all of you for joining us.